Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen the concept of polymorphism and how we can achieve that polymorphic effect in C++ programming, and that we have seen the example program and virtual function, and using virtual function in the base class we can achieve the polymorphic effect in C++. Then we have seen what is static binding and what is dynamic binding. So static binding is something that is resolved at the compile time कि कौन सा function call किया जाएगा, and dynamic binding is something that is resolved during the execution of the program, that is at runtime or execution time. Then we have seen what is an abstract class and pure virtual function. So pure virtual function, अगर आप किसी class में उसको declare कर देंगे pure virtual function को, then that class will become an abstract class. Means that no object of the abstract class can be created, and if a derived class, if any class is derived from that abstract class, then that derived class must override that pure virtual function. If the derived class won't override or won't provide the definition of the pure virtual function in its definition, then that derived class also become an abstract class, means that no object of that class can be created. So अगर आप abstract class का object बना लेंगे, and if you are going to call that pure virtual function using that object, then उसकी फंक्शन डेफिनेशन तो हमने प्रोवाइड की नहीं हुई, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की जाती. तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जब आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ वो फंक्शन कॉल करेंगे. सो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए C++ अलाउ नहीं करती कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकें. ठीक है. सो कैन नॉट क्रिएट an object of abstract class, and if any class is derived from the abstract class, then it has to override or provide the definition of all the pure virtual function that exist in that abstract class. If the derived class won't provide the definition, then that derived class also become an abstract class. So in today's lecture we will see first the example program of a person class, and then we have a derived class, a scientist and a student. And this example will show that how we are going to achieve the polymorphic effect. And then we will see what is a virtual destructor, and then friend functions, friend classes, and virtual functions then, right? So this is the outline of today's lecture. Let's start with the example program. In this example program we have a person class that contains the two pure virtual function, and we have another class scientist that is derived from the person class, and another class student that is derived from the person class, and both of these derived classes override the pure virtual function in the person class. So this is the definition of a person class. It contains one protected member. So protected data is accessible in the derived class, right? And it contains the public functions get name, put name, and then pure virtual function get data and is outstanding, right? So for professor there is a special field for the professor, that is number of publication, that is noted by num_pubs, that is number of publications, and a professor is outstanding if his publications is greater than 100, right? So there is a conditional operator. If number of publications greater than 100, it will return true, otherwise it will return false, and the return type of the function is outstanding is boolean, right? So that is for the professor. But for the student, a student is outstanding if it gets a GPA greater than the certain GPA, right? For example 3.75 से above GPA लेता है तो वो function 2 return करेगा. So for professor class outstanding की definition different होगी, for student class is outstanding function की definition different होगी. So get data function को भी इसने override किया है. Now the professor class is not an abstract class. We can create an object of professor class because it override or provides the definition of the two pure virtual function, that is get data and is overriding
और जो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के थे, राइट. सो पब्लिक इनहेरिटेंस है from the person. Professor class is publicly inherited from the person class, and it just contains these two functions. Now the object of, so public inheritance का मतलब ये है कि object of professor class can access the public function of the base class as well. ठीक है. So base class के जो function है get name और put name, इन दोनों को access किया जा सकता है. So get data का function सबसे पहले get name का फंक्शन कॉल करेगा जो कि पर्सन की क्लास का फंक्शन है. ठीक है. सो क्लास नेम पर्सन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन. सो get name will ask the user to input the name of the professor and then see out enter publications. So then you input the publications. So professor का क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके दो प्राइवेट डाटा मेंबर होंगे. The first one is the name that is inherited from the base class or the parent class, and the second one is the number of publication that is its own private data member, right? Similarly, student class, we have another drive class that is publicly derived from the person class. So the name of the class is student. It has a private data member GPA, right? And see the outstanding function. So this outstanding function is different from the professor class. And now we have a condition GPA is greater than 3.5, then it returns true, otherwise false, right? So return type of its outstanding function is boolean, that is it returns either true or false. So अगर मैं स्टूडेंट की क्लास में, हम स्टूडेंट की क्लास में उन प्योर वर्चुअल फंक्शन को जो कि पर्सन की क्लास में, that is a base class में एग्जिस्ट करते थे, if we don't override or provide a definition of those function in the student class, then the student class also become an abstract class. ठीक है. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बिकॉज इफ आई गो बैक एंड so if I create an object of person class, right, p, and if I write p dot get data, then what will be executed? If I write p dot get is outstanding, then what will be executed? ठीक है. so कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी? ये पर्सन क्लास की डेफिनेशन में मेंशन नहीं है. so that's why it become an abstract class, because it contains the definition or declaration of the pure virtual function in its definition, and you are not able to create an object of abstract class, and that is the reason. So professor class and then student class. अच्छा, student class में एक और जो pure virtual function को override किया गया, that is get data. So you are calling again the same function. So अब student के जो class का जो object बनाएंगे उसके जो private data member होंगे, these are the name that is inherited from the base class, that is person class, and the other thing is the GPA, that is the private data member of the student class. So person, scope resolution operator, get name function call किया, उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इट विल डिस्प्ले द मैसेज एंटर नेम, देन वेटिंग फॉर द यूजर टू इनपुट सम नेम, एंड देन एंटर जीपीए, सी इन जीपीए. सो दो चीज़ें इसने इनपुट ले ली. नाउ दिस इज द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन को में सबसे पहले हमने एक पर्सन टाइप की डिक्लेयर कर ली, एक array of pointers whose type is person. That means this array of pointers PERS PTR whose size is 100 contains the addresses of all the objects of person class. ठीक है. So person class से जो भी class आप ड्राइव करेंगे, अगर उस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, so that is an object of we can say that is also an object of a person class, right? n को हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया. Now so PER1 PTR PERS PTR और n की वैल्यू 0 है. so इस array के 0th इंडेक्स में, इस array के 0th इंडेक्स में we assign the address. So this new operator reserve the memory for a student object and return the address. That address will be assigned over here in the 0th index of that array. ठीक है. So 0th index में आ जाएगा वो address, and then we call a function. So PERS PTR n. So 0th index में जो address पड़ा है उसके साथ आप arrow operator use करें, that is you go to that memory location where an object of student type is present, and then you are calling the function get data. So student का जो get data है वो call हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. So this function will be called and
इसके बाद आप नेम इनपुट करेंगे और जीपी इनपुट करेंगे, राइट। एंड देन आपने n को इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ n बिकम 1, देन यू एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स। सो PRS PTR के 1th इंडेक्स पे you write assign the address of professor object. So this new operator create an object of a professor class and assign the address to the 0th index of array. So new operator address memory allocate करने के बाद उसका address return करेगा और then assignment operator के through वो address assign हो जाएगा PRS PTR के 1th index पर। And then this with 1th index you are calling again the get data function। अब कौन सा get data function कॉल होगा, वो देखिएगा ये पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, वो ऑब्जेक्ट है प्रोफेसर क्लास का। सो प्रोफेसर का गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, then that function is same as that is the get data function of a professor class. So you input this function, when you call this function it will ask to input enter name, you enter name, and then it will display the message enter publication, then it will prompt for the number of publications, right? Okay, then we have a for loop. It starts with 0 and goes up to n. So हमने दो रिकॉर्ड एंटर कर लिए थे, दो पॉइंटर के जैसे कि दो ऑब्जेक्ट बना लिए थे, एक स्टूडेंट का एक प्रोफेसर का। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को 0th इंडेक्स पे उसका एड्रेस रख दिया था इस अरे के, और प्रोफेसर ऑब्जेक्ट का 1th इंडेक्स पे एड्रेस रख दिया था पर्सन टाइप अरे ऑफ पॉइंटर के, ठीक है। नाउ वी कॉल अ फंक्शन PRS PTR J। सो 0th इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके साथ अपने फंक्शन कॉल किया पुट नेम। सो पुट नेम फंक्शन इज नॉट, सो 0th इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था। सो स्टूडेंट की क्लास में देखिएगा क्या पुट नेम कोई फंक्शन है, नो देयर इज नो पुट नेम फंक्शन। सो इट विल कॉल द फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। सो बेस क्लास में आपके पास ये फंक्शन है पुट नेम, या दिस फंक्शन। सो इट विल राइट द नेम ऑन द स्क्रीन, नेम इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट। एंड देन it will check with the same object, it will call the function is outstanding. Now this function will be called, जब फंक्शन कॉल होगा तो ये जीपी की वैल्यू चेक करेगा उस ऑब्जेक्ट की, कौन सा ऑब्जेक्ट की, जिसका एड्रेस PRS के 0th इंडेक्स पे है। अभी जे की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके जीपी को चेक करेगा, एंड इफ द जीपी इज ग्रेटर देन 3.5 it will return true, otherwise it will return false. Okay, and based upon that CN you print the message see out this person is outstanding, ठीक है। इसी तरह से जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, this condition is still true because 1 is less than 2. then again यहाँ पर अब आप PRS PTR 1th इंडेक्स को एड्रेस को ले रहे हैं, और वो जो एड्रेस है वो प्रोफेसर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, एंड यू आर कॉलिंग पुट नेम फंक्शन। So it will call the function of the base class because there is no put name function in the professor class, and then it will call the function is outstanding. So is outstanding जो function है that is virtual in the base class, so it will call the function of professor class, ठीक है। So professor class का function call करेगा because PRS PTR के 1th इंडेक्स पर जो एड्रेस पड़ा है वो एड्रेस प्रोफेसर क्लास की ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, सो उसकी जो मेमोरी एलोकेट हुई है। सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द फंक्शन इज आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेसर क्लास, एंड देन इट डिस्प्ले द मैसेज दिस पर्सन इज आउटस्टैंडिंग if that function returns true। अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है इज आउटस्टैंडिंग का तो मैसेज डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नाउ लेट्स गो टू द प्रोग्राम, the dev C program, and execute this program and see the output. Okay, this is the program. So यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जाम्पल okay, first execute this program and see the output. So let me compile it. So this is the person class, professor class, right, student class, and this is the main function. So main function में मेरे पास do while loop है. So enter student और professor, वो मुझसे पूछेगा कि आपने क्या enter करना है. Do you want to enter student record or do you want to enter professor record? And then accordingly वो मुझसे input लेगा, ठीक है.
If the choice is S, it will create an object of student and assign its address to the nth index of that array. If that is not S, then it will create a professor object and assign it to the nth index. ठीक है, उसके बाद वो get data का function call करेगा and then it will prompt me to enter another record or not. So let's enter 2 record. Okay, enter student or professor. So let's say student, enter name Jamil, enter student's GPA, that is 3.75. Do you want to add another record? Say yes. So enter student or professor, we say student record, name Tariq, GPA 3.4, so it is not, he is not outstanding student. Enter another record, yes. So student or professor, professor's record we are going to input, name of professor is Usman. So enter number of publication of professor's publication, enter number of professor's publication, let's say these are 102, so it should say the professor is outstanding. Do you want to add another record? We say no. Now it display all the record. So name is Jamil, this person is outstanding. Why? Because the Jamil's GPA is 3.75, right? And then it display name is Tariq and name is Usman. So with Tariq it didn't display the message that this person is outstanding. Why? Because the GPA of Tariq is 3.4, that is less than 3.5. Then it display the message name is Usman, this person is also outstanding because Usman is a professor and his number of publication is 102. So हमने यहाँ पे condition लगाई हुई थी कि अगर publications is greater than 100 हैं तो वो true return करेगा. So इसने true return किया और जहाँ पर message display कर दिया this person is outstanding, right? Now there is one more thing that it won't display. So Jamil, मेरे पास लिखा रहा है name is Jamil, right? It won't say that what is the GPA of Jamil, what is the GPA of Tariq, what is the number of publication of Usman. ठीक है? So ये चीज़ें display नहीं कर रहा. How we are going to display those things? So put name का जो function है, that is in the person class. So person class में function है put name का, कहाँ पर है? So that is the function, right? So we do not have any function here in the professor class that display number of publications. Okay, so let's write a function void or int get publications, get pub, and let's call this function, and this function should return right. So make another function in the student class, that is float get GPA, and that function returns GPA. ठीक है जी. Now what we can do over here is we can call those functions. So let's say if we can do it or not, I don't think so. Let's check it out. Let's say so हम इस चीज़ को जहाँ पर बजाय अलग फंक्शन बनाने के what we can do is we can have a function, let's say int get data in both the classes, and it will return pubs, right?
So then we have a same function with the same name in the student class get data. Return type क्या है इसकी? float है, right? So it will return GPA, right? So then we come over here at this place and we call the get data function. Let's see what happened if we can call this function with that pointer or not. ठीक है, so name जो है वो name input print कर देगा और get data जो है वो data print कर देगा. So let's see out. Okay, now let's compile this program. Okay, it gives error int professor get data and void professor cannot be overloaded. Okay, this so we have the same name, same function already exists in the class. So what we can say is this is set data. So the name of the function is set data. So it should be set data because it set the private data member of that object. ठीक है, so इसको हम change कर लेते हैं यहाँ पर भी, student की class में भी. Now we have a set data function and is outstanding function that are pure virtual function in the person class. So set data की हमने definition provide कर दी है, is outstanding की definition provide कर दी है, get data function returns the number of publication of the professor class. ठीक है, इसी तरह से student की class में set data function को override कर दिया, is outstanding को override कर दिया and get data function है जो कि return कर रहा है GPA. ठीक है, so अब अगर ये जो एड्रेस है अगर ये स्टूडेंट का हुआ तो ये स्टूडेंट का कॉल हो जाना चाहिए, अगर ये प्रोफेसर का हुआ तो प्रोफेसर का गेट डाटा कॉल हो जाएगा. ठीक है, बट आई डाउट इफ इट वर्क करेक्टली एंड लेट्स सी द रीजन इफ इट वोंट वर्क करेक्टली. ओके, सो क्लास पर्सन हैज नो मेंबर फंक्शन नेम गेट डाटा, राइट? सो इट set data. Okay, so class person, the error message it gave on this line is that class person has no member name get data. So class person की class में कोई get data के नाम से function नहीं है. उसमें जो function है these are set data and get name, put name, set data is outstanding. ये चार functions है. ठीक है, so but here it prompts, it gives an error that in this line because the type of this pointer, type क्या है इस pointer की? type है person. so get data person class में exist करना चाहिए, चाहे उसकी definition ना हो, चाहे वो empty function हो, whatever. ठीक है, so it should be a virtual function in the person class. अगर हम ये चाह रहे हैं कि इस पॉइंटर पर जो एड्रेस पड़ा, इस पॉइंटर के पास जो एड्रेस है, इस इंडेक्स पे jth इंडेक्स पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है प्रोफेसर के ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का या स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का, सो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली गेट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट हो. अगर वो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है jth इंडेक्स पे तो गेट डाटा स्टूडेंट क्लास का एग्जीक्यूट हो. अगर वो jth इंडेक्स पे प्रोफेसर क्लास के ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है तो गेट डाटा प्रोफेसर का एग्जीक्यूट हो. इन order to achieve this kind of behavior we have to make get data function a virtual function in the base class. ठीक है, so इसको virtual function यहाँ पे बनाना होगा. अगर virtual function नहीं बनाएंगे तो base class का वो function कॉल कर लेगा, right? so it should be a virtual function.
So इसकी return type same होनी चाहिए. Let's say this return a floating point value. It will typecast that value by itself. Okay, floating point value return कर रहा है. Get data. Name is the name of the function. Get data. Okay. So अगर मैं इसको virtual function नहीं बनाऊंगा तब क्या होगा? Let's see the effect. See out person get data end line, right? Now there will be no error, and let's execute the program. So enter student or teacher. Let's say student. Name is Kamal. GPA is 3.67. No. Okay, so display the message name is Kamal, persons get data. So यहाँ पर जब इस लूप में आया है तो यहाँ पर सबसे पहले वो get name कॉल करेगा, function put name कॉल करेगा. So it will put the name on the screen, that is name is Kamal, and then it call the function, this function, right? So one उसने display कर दिया, one. So it display the message persons get data, right? Because now the get data जब function यहाँ पर call किया जाएगा, so because this pointer is of type person, so वो get data person का call करेगा. So person का जब get data call होगा, it will display persons get data. So persons get data display कर दिया उसने message, ठीक है? यहाँ पर हम दोबारा लिख देते हैं end line, right, semicolon, and then there is some garbage value that is appearing. So let's once again compile and run the program. Okay, professor data, name of the professor is Hamid, enter number of publication for professor. So let's say these are 207. No. Okay, it says name is Hamid, and then it call a function persons get data, and then there is a garbage value that is appearing. So the question is that that if we won't make the get data function virtual function in the base class, that is the person class, then इस तरह पॉइंटर से जब भी आप कॉल करेंगे गेट डाटा फंक्शन को तो वो पॉइंटर की टाइप को देखेगा. पॉइंटर की टाइप क्या है? पर्सन है, वो पर्सन का गेट डाटा कॉल करेगा. अगर गेट डाटा फंक्शन, इफ दैट फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास, दैट इज इन पर्सन क्लास, देन इट विल लुक एट कि इस पॉइंटर के पास इस इंडेक्स पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है ड्राइव क्लास का. देन वो ड्राइव क्लास का वो फंक्शन कॉल करेगा. सो लेट्स मेक दैट फंक्शन virtual by using a keyword virtual. Now let's see which function it will call. So let's say student, name is Yusuf, GPA is 4.5. Yes, enter student or professor, name is Tariq, number of application is 45. No. Okay, now display the message name is Yusuf, and then CGPA is 4.5. So this person is outstanding because it has the GPA 4.5, and then name is Tariq and publication is 45, right? So हमने उसको virtual जब बना दिया get data को base class में, अब वो इस पॉइंटर पे इस इंडेक्स पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप को देख के गेट डाटा का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. सो अगर वो
उस एड्रेस पे जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्टूडेंट टाइप का है देन द स्टूडेंट का गेट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोफेसर टाइप का है तो प्रोफेसर का गेट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। लेट्स रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन। स्टूडेंट नेम इज Jamil, CGPA is 3.6, no, right? And if I remove the keyword virtual, अगर मैं यहाँ से कीवर्ड virtual रिमूव कर दूँ गेट डाटा से फंक्शन से बेस क्लास में, अब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पर्सन्स गेट डाटा इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन एंड लाइन इंसर्ट कर देगा, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट। Oops. Okay, so professor name is Kamal, number of publication is, let's say, 105, no. Okay, it displays the message this person is outstanding, but it also says persons get data, so उसने person का get data execute किया है, base class का, professor की class का नहीं किया। But if we make that function virtual, then it will execute the get data function of that drive class object, ठीक है, जो कि उस pointer पे पड़ा हुआ। I hope now that is very clear to you. Now let's come to the topic of virtual destructor. So a problem can occur when using polymorphism to process dynamically allocated object of class hierarchy, right? So for example, applying delete operator to a base class pointer which points to a drive class object, then यहाँ पर base class को delete कर देगा pointer को, या वो drive class के object को delete करेगा, या दोनों को करेगा deallocate memory. So let's say we have a pointer of a base class. Now we create an object of a drive class. Now we assign the address of a drive class object to the pointer of base class. Then we say delete PTR. So when we write this, it will not delete actually, or this is not allowable, or actually it won't delete the drive class object, right? So the solution is to use the virtual destructor. A virtual destructor is in base class make all the drive class destructor virtual, right? So अगर virtual class में हमारे पास destructor होगा, so drive class में जितने भी destructor होंगे उनको वो virtual assume करेगा। Now if we have a pointer of a base class and a drive class object dv1, and we assign the address of the drive class object to the pointer, and then we call the function delete ptr. Now this function is executed because the destructor is virtual in the base class, ठीक है। तो जब destructor virtual होगा तो तमाम destructor जितने भी drive class में destructors आ रहे हैं वो तमाम के तमाम virtual assume होंगे। Now the destructor for the appropriate class is called first. So check करेगा ptr pointer किस drive class के object को point कर रहा है, वो derv1 class के object को point कर रहा है, then it will first call the destructor of derv1 class, and उसके बाद वो base class का destructor call करेगा। Previous case में जिसमें हमारे पास virtual destructor नहीं है, this is not allowable because उस केस में वो base class का destructor call करेगा, drive class का destructor call नहीं करेगा। This means कि drive class का object delete नहीं होगा। So when drive class object is destroyed, base class part of the drive class object is also destroyed. So base class destructor is executed after drive class destructor. So जितनी भी drive classes हैं उनके destructor पहले execute हो जाएंगे hierarchy में। अगर एक ही क्लास से ड्राइव लिया हुआ है आपने उस क्लास को, तो ये दैट मीन्स के मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टीपल इफ द बेस क्लास इज द डायरेक्ट बेस क्लास ऑफ अ ड्राइव क्लास, तब सबसे पहले वो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करने से पहले वर्चुअल ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, देन बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। सो वी हैव अ बेस क्लास एंड वी क्रिएट we have a drive derv class that is publicly inherited from the base class, ठीक है। so base class में हमारे पास destructor है एक, इसमें just एक statement है that is base destroyed, and then in derv class we have a public
डिस्ट्रक्टर that says DERV destroyed. So इस पे हमने चेक करना है कि कौन सा डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय होगा. Now यहाँ पर बेस क्लास में डिस्ट्रक्टर virtual नहीं है, because virtual डिस्ट्रक्टर जब होगा we have a keyword virtual there. Now in the main function we create a pointer of a base class, and then we create an object of a drive class and assign the address of that object to the base class pointer, right? Now we have a pointer 4 byte जो कि base type का pointer है. It points to a memory location where we have an object of a drive class, and then we execute delete p base, right? So let's see the memory map without virtual destructor. So this is what we get, that is a base pointer points to an object of DRV class, and when we execute delete, it will delete the pointer but it will remain the object in the memory. So object delete नहीं होगा drive class का, pointer delete हो जाएगा. ठीक है. So program output आपके पास आएगी base destroyed, that's it. ठीक है. इसका मतलब है कि base class का जो pointer था वो destroy हो जाएगा, जबकि drive class का destructor execute नहीं हुआ. Now let's see the same scenario with the virtual destructor. So we have previously we have a simple destructor, now we have a virtual destructor. So this is a virtual destructor with the keyword virtual, right? Now when the destructor is virtual in the base class, it assumes that all the destructor in the drive classes, they are also virtual, right? So with virtual destructor, so if we have this kind of situation and we execute delete p base, if delete p base को करेगा, it will look at the type of the object that p base pointer is pointing. So p base pointer के पास जो address है, उस address पे जाके देख लिया कि किस type का object मौजूद है. If the type of the object is DERV, then it will execute first the destructor of DERV. So सबसे पहले आपके पास DERV के destructor execute होगा, तो message print हो जाएगा DERV destroyed. Then it execute the destructor of the base class and you will get the message base destroyed. Right, so these are the two messages that appears. Let's go to the program. So this is the program. So हमारे पास base class है, and then we have a drive class that is inherited publicly from the base class, and then these are the two statements in the main function. Now with this statement, it create a pointer. It allocates 4 byte to p base. Now this pointer points to an object of a base type. ठीक है. So हमने drive class का object बनाया, DRV class का. Now drive class का object is also considered an object of a base class, and the address is assigned to the p base, and then we execute delete p base, right? System pause. Now let's see. So you must have a semicolon over here. Okay, just have to change this inverted quotes. Okay, now there's no error, and if I run it, let me change the screen resolution so that it is visible to you guys. Say 50 and layout. Okay, now I display the message base destroy. That's it. Why display the message? Because when you delete this pointer, it will delete the base, this pointer only, that is of the base type, और तब वो base class का destructor execute करेगा. Now if we make this destructor virtual, ठीक है, अगर हम इसको destructor को virtual बना देंगे base class में, then the destructor in all the drive class also become virtual, right? So now if you delete this p base pointer, अब क्या होगा कि सबसे पहले वो execute करेगा drive class का destructor. अब base class में जिस तरह function virtual होता था, तो वो उस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को एग्जीक्यूट करता था जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उस पॉइंटर के पास मौजूद है, जिसकी टाइप बेस है. ठीक है,
सो सेम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि बेस क्लास के पास जो पॉइंटर है उसका वो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है दैट इज DRV ऑब्जेक्ट. सो जब आप इस पॉइंटर को डिलीट करेंगे इट विल फर्स्ट लुक एट द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट. टाइप क्या है? DRV है, टाइप का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है. इट विल फर्स्ट एग्जीक्यूट द डिस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास एंड देन इट विल एग्जीक्यूट द डिस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास. सो नाउ कंपाइल इट and execute it. So now it display the message DRV destroyed and then base destroyed. ठीक है, तो सबसे पहले इसने ड्राइव के डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया and then it execute the destructor of the base class. Okay, now let's say that if we have another class DERVB publicly inherited from DERV. So we have a class hierarchy now and it also has a public destructor drive B and it displays the message cout. इसको उसी तरह से कर लेते हैं एक ही लाइन में ताकि DRVB destructor /n semicolon and this is the closing bracket. Okay, now if we create an object of this class, right, like this. So अब हम हमारे पास hierarchy बन गई है. We have a base class, we have a drive class DRV class and then we have a DRVB class. ठीक है, सो DRVB जो है वो इनहेरिटेड है DRV से और DRV जो है दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास. ठीक है, एंड वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ DRVB एंड असाइन इट्स एड्रेस. सो ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस असाइन हो जाएगा P बेस को एंड देन वी डिलीट P बेस. नाउ लेट्स सी कि अब इसकी एग्जीक्यूशन आउटपुट किस तरह से आती है. सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए इस ड्राइव क्लास B का, डिस्ट्रक्टर कॉल हो चाहिए देन ड्राइव क्लास का एंड देन बेस क्लास का. सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ड्राइव B क्लास का, राइट, एंड देन इट डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑफ द ड्राइव क्लास एंड देन DRV क्लास एंड देन बेस क्लास, राइट. सो बिकॉज if the base class destructor is virtual then the destructor in all the drive classes hierarchy में वो कहीं पर भी आ रही हों उन तमाम के destructor virtual हो जाएंगे, right. और जब virtual होंगे तो ये पॉइंटर किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? DRVB क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. ये पॉइंटर P base. Now it will first execute the destructor of DRVB class and then उसके बाद किस डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा? DRVB के बेस क्लास के. सो इसकी इमीडिएट बेस क्लास जो है DRV है. सो DRVB की बेस क्लास दैट इज DRV के डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद एंड उसके बाद इसकी बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, और इसी तरह से ये हायरार्की में ऊपर चलता जाएगा जब तक कि वो होम या पेरेंट बेस क्लास तक नहीं पहुंच जाता, राइट. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर. I hope it will be clear. Okay, now virtual base class. A problem can arise if a member function in the grandchild wants to access data or function in the parent class. So let's see the hierarchy of a class. Now we have this hierarchy. We have a parent class that is a parent base class. Then we have a child class inherited from the parent class, child 2 class inherited from the parent class. And then we have a grandchild class that is inherited from child 1 and child 2. ठीक है, so child ये जो inheritance है this is the multiple inheritance that grandchild is inherited from multiple classes that is child 1 से भी वो inherit हुई हुई है और child 2 से भी inherit हुई हुई है. So what kind of problem occur when the child 1 and child 2 classes are derived from parent, each inherit a copy of parent. This copy is called sub object. So पेरेंट के पास जितने भी फंक्शंस डेटा मेंबर्स हैं उनकी कॉपी चाइल्ड 1 के पास भी आ जाएगी, चाइल्ड 2 के पास भी आ जाएगी. सो एक सब ऑब्जेक्ट चाइल्ड 1 के पास होगा
of the parent class, एक सब object child 2 के पास होगा of the parent class. Now if the grandchild calls any function of the parent class, ठीक है, तो उसकी एक कॉपी child 1 के पास भी है, child 2 के पास भी है. Now the ambiguity is that कि वो किस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा C++ compiler, right? Let's see the problem here. So we have a parent class, it has a protected data member, base data. Now that data is accessible in all the drive classes. And then we have a drive class child 1, publicly inherited from the parent, child 2 publicly inherited from the parent. Now base class जो data member है वो child 1 का भी part बन जाएगा, child 2 का भी part बन जाएगा, same name, right? Then we have a grandchild class that is inherited from the child 1 and child 2. दोनों classes inherited हो रही है, public inheritance है. And it has a function get data and it call and it return a base data. So base data तो parent class के, but child 1 के पास भी कॉपी है, child 2 के पास भी कॉपी है, और grandchild जो है वो दोनों से inherit हुआ हुआ है. Now confusion क्या होगी कंपाइलर के लिए कि वो base data जो है वो child 1 का access करे या child 2 का access करे, because both have the base data member. ठीक है, base data name से दोनों के पास data member मौजूद है. So that is the base data of a parent class. So when child 1 is inherited, it gets its own copy, child 2 is inherited, it gets its own copy. Now अब grandchild जब access करेगा base data को, then there is a confusion. So this situation is ambiguous because अब compiler को पता नहीं चलेगा कि base data वो child 2 से access करे या child 1 से access करे, right? And that's what the compiler reports an error about that. So compiler इस situation में एक error report करेगा. And I hope the problem is clear कि एक parent class के पास हमारे पास data member है, तो दो classes उससे inherit हो रही हैं, child 1 and child 2 both have their own copy in their sub object. And when a grandchild class that is inherited from these two child classes try to access that data, then the confusion or the ambiguity is that which base data will be accessed, either of the child 1 or either of the child 2, right? So to remove this confusion, we have to use a virtual keyword. Now the type of inheritance is virtual public from the parent class. So class child 1, inheritance type is virtual public inheritance from parent, inheritance type is virtual public from parents. Now if a grandchild class is inherited from a child 1 and child 2 class, now it can access this base class data member, because when we use a keyword virtual, this means that child 1 and child 2 share the same copy of the data member of the parent class. So a keyword virtual in these two classes causes them to share a single common sub object of their base class parent. So child 1 के पास भी वही कॉपी होगी जो child 2 के पास है base data की, right? Because they share now a single copy. Now if the grandchild access a base data, so child 1 and child 2 के पास same copy है, that is a single copy that is shared between child 1 and child 2. So grandchild can access that, grandchild class can access base data class without any confusion now, right? Let's go to the program. So that is the program. We have a base class and that is a grandchild class. So अगर मैं इसको virtual को हटा दूँ यहाँ से इस कीवर्ड को, now let's see if there is any confusion or not. Now I call a function set data. So set data का function क्या कर रहा है कि वो base के data को set कर रहा है. And let's say in cout it prints g1 dot get data and semicolon to less. Okay, जहाँ पर उसकी values को print कर देगा. And line, let's compile it. It gives an error. Reference to a base data is ambiguous. Why? So in the grandchild class we are going to access base data, that is the data member of a parent class, but the problem is that grandchild class is not inherited from the parent class. It is inherited, it uses multiple inheritance, okay? So it is inherited from the child 1 as well as it is inherited from the child 2. And child 1 and child 2 are inherited from the parent class. Now child 1 has its own copy of the base data, child 2 has its own copy of the base data.
And if the grandchild that is inherited from child 1 and child 2 try to access base data, now it gives an error that reference to the base data is ambiguous. So the clients are int parent base data, int parent base data. So दोनों classes के जो because int parent base data जो है वो child 1 के पास है, इसी तरह से int parent base data जो है वो child 2 के पास है, ठीक है. So इसमें kind of duplication आ रही है, right? So to solve this problem, we have to make this kind of inheritance a virtual inheritance. So we write a keyword virtual, control S, and then if we compile it, it compiles successfully, and now we can run the program and gives us 2. आउटपुट पे हमारे पास 2 आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे वैल्यू 2 सेट की थी, ठीक है. सो अब जब ये ग्रैंड चाइल्ड बेस डाटा को एक्सेस करेगा, since the type of inheritance is virtual public, so child 1 class is inherited from the parent class and the type of inheritance is virtual public, and child 2 class is also inherited from the parent class and the type of inheritance is virtual public. So जिस तरह से virtual data member जो class का होता है that is shared among all the object of that classes. So virtual inheritance अगर है किसी भी क्लास की पेरेंट क्लास के साथ, तो तमाम वर्चुअल इनहेरिटेंस वाली क्लास जो हैं वो पेरेंट क्लास की एक सेम कॉपी को शेयर करेंगी, ठीक है. सो अगर मैं एक और क्लास बना दूं जिसमें इनहेरिटेंस की टाइप वर्चुअल ना हो पेरेंट के साथ, तो उसमें पेरेंट क्लास के जितने भी डाटा मेंबर है उसकी सेपरेट कॉपी मौजूद होगी, ठीक है. सो यहाँ पर चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 दे आर शेयरिंग दिस बेस डाटा नाउ. So there is one base data now. So with that, the grandchild can easily access that base data member of the parent class without any ambiguity, right? So that was the concept of virtual, of using a virtual in the multiple, you can say in the hierarchy of inheritance or the multiple inheritance. Now let's see what is a friend function. We have already seen the friend function, but let's see the friend function in a little bit more detail. Okay, first look at the let's look at the data hiding principle. That is, non-member functions should not be able to access an object's private or protected data member. So class के जितने भी member function हैं सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकें. दैट इज डाटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन, ठीक है. सो आपने डाटा को एनकैप्सुलेट कर दी क्लास के अंदर, सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं वो प्राइवेट डाटा मेंबर को, और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को पब्लिक मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं. नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है. एंड यू नो व्हाट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन एंड व्हाट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास. So if you are not a member, the rule is that if you are not a member, you cannot get in, right? So however, there are situations where such restriction leads to considerable inconvenience. Imagine a function to operate on object of two different classes. हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि दो मुख्तलिफ क्लासेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है. मीन्स that function required to access the private data member or the protected data member of those objects, right? But since that function is not a member function of any of these two classes, हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसको member function बना दें क्लास A का भी और member function बना दें क्लास B का भी, और उसमें दोनों जो है वो objects को पास कर दें. For example, the function like this, display function alpha A, alpha beta B. So alpha and beta are two classes, display is the name of the function. So this function, अगर ये function member होगा alpha का भी beta का भी, still that thing cannot be achievable, right? So in order to achieve such thing, display function must be a friend function of a alpha and beta class. So दोनों class का उसको friend function होना ज़रूरी है in order to execute such operations, कि वो दोनों ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा मेंबर को, अल्फा क्लास के ऑब्जेक्ट्स के प्राइवेट डाटा मेंबर को और बीटा क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सके, ठीक है. सो फॉर दैट द फंक्शन शुड बी अ फ्रेंड फंक्शन. लेट्स सी द एग्जांपल प्रोग्राम. सो वी हैव अ क्लास बीटा एंड देन क्लास अल्फा. क्लास अल्फा में एक प्राइवेट डाटा मेंबर है x, एंड
this is the constructor of alpha class that initialize x with 3. Then we have a friend function fri func. So इसमें हम अल्फा टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और एक बीटा टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं. बीटा क्लास है, उसका प्राइवेट डाटा मेंबर है एक y, और बीटा का जो कंस्ट्रक्टर है वो y को इनिशियलाइज कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 7 वैल्यू से. एंड वी हैव अ फ्रेंड फंक्शन fri function fri func, that is a friend function. It returns an integer and there are two objects we are going to pass to that function. So this is a function definition. So friend function की definition हमेशा class की definition से बाहर आएगी, because that friend function is not a member function of any class. So alpha a, beta b. So a dot data, sorry, this is not data, this should be x. So this is a dot x, that is a private data member of alpha class, and b dot, this should be y. So b dot y, that means कि वो b ऑब्जेक्ट जो कि बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका प्राइवेट डाटा मेंबर एक्सेस कर रहा है इस फंक्शन के अंदर. ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज वी मेक फ्रेंड फंक्शन. सो हमने fri func को फ्रेंड फंक्शन बनाया था बीटा क्लास में भी, अल्फा क्लास में भी. दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज एबल टू एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा क्लास. सो दिस विल बी द मेन. सो सी आउट, जब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ को तो हमारे पास 7 + 3 10 आउटपुट आ जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, राइट. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन, कि वो जिस क्लास का भी आप एक फंक्शन को 20 क्लास का भी फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है. जितनी चाहें क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन बना दें और वो फ्रेंड फंक्शन उस क्लास के ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट उसे पास किए जाएँ बाय वैल्यू एज ए पैरामीटर्स को पास किए जाए, ठीक है. अगर ये किसी और क्लास गैमा क्लास है हमारे पास, उसका भी फ्रेंड फंक्शन होता है तो हम गैमा ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी लिख के गैमा जी और जी डॉट जी फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू 10, हम उसको वैल्यू असाइन भी कर सकते थे 10 प्राइवेट डाटा मेंबर को, ठीक है. सो अ फ्रेंड फंक्शन, if it is a friend of any class, then it can access the private data member of those classes. Let's see the distance example. So this is a distance example. इसमें हमारे पास distance की class है, that is we already know this class. So we have a default constructor with one argument, and this is a constructor with two argument, and show dest function, and one member function that is operator plus. So एक operator जो plus का operator है उसको overloaded function, उसका overloaded function भी हमने इस class में लिख दिया है. This is the definition of operator plus function, right? So ये चीज़ें हमें already पहले से ही मालूम है, ठीक है. So let's go through quickly. So when such constructor exists, this constructor, if that kind of constructor exists, then following statements are allowed. For example, we can write a statement like this as well. That is, if we want to assign any floating point value to an object of a distance class, then what happen is that it will first pass that value 15.5 to the single value constructor, this constructor that is highlighted over here. इसको पास करेगा ये वैल्यू, ये कंस्ट्रक्टर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा. द स्टेटमेंट विल बिकम इंटरनली d3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, नेमलेस ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस क्लास, जिसका फीट को 15.5 फीट से इनिशियलाइज कर दिया, जिसके डिस्टेंस को दैट मीन्स फीट और इंचेस को 15.5 फीट से इनिशियलाइज कर दिया, राइट. एंड वी कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट लाइक दिस. तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, सबसे पहले दैट वैल्यू विल बी पास टू द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर. दैट कंस्ट्रक्टर will initialize, will create an object and initialize its feet and inches with 10.0 feet and then return an object. So अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, d3 is equal to d1 plus object of a distance class. So we have a plus operator that is used to add two distance, and we have the two distance object, right? So for these two statements we can execute, we can have this constructor and this will be executed. But so what we conclude from that slide is, if we have d3 is equal to 10.5, so 10.5 is passed to a first one argument constructor, and 10.5 is then converted into distance object,
सो एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके फीट और इंचेस को 10.5 फीट से इनिशियलाइज किया जाएगा. दैट मीन्स 10 feet and 0.5 multiplied by 12 inches. And then D3 is equal to nameless object of distance class. So expression क्या बन जाएगी, ये वाली expression D3 is equal to nameless object of distance class, और इस distance object nameless object के feet और inches को 10.5 value feet से initialize किया गया होगा. So if we have a statement like D3 is equal to D1 plus 9.75, then 9.75 is converted into distance object by calling a one argument constructor. Then operator plus function is invoked by D1 object. So D1 become the invoking object and that nameless object will be passed to that function. ठीक है. So ये जो nameless object यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पर जिसके feet और inches को 9 और 0.75 inches से 0.75 into 12 इंचेस से इनिशियलाइज किया गया होगा फीट और इंचेस को उस ऑब्जेक्ट से. सो वो ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास हो जाएगा ऑपरेटर प्लस फंक्शन को. इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होगा D1. नाउ इफ वी हैव अ स्टेटमेंट लाइक दिस, D3 is equal to 6.5 plus D1, right? नाउ विल दैट स्टेटमेंट विल वर्क और नॉट. सो यहाँ पर हमारे पास अब पहले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, सेकेंड वन इज देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो पहले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है and then object, right? So that statement will not work, but we can write a statement like D3 is equal to distance 6.5 plus D1. So हम इसको explicitly mention करके कि खुद से इसको वो convert कर देगा, then so we have to mention it explicitly, calling the constructor explicitly and then add it to 1, right? But here इस situation में वो constructor implicitly call हो जाएगा. ठीक है. And then बाद में operator plus का function call हो जाएगा, but in that case it won't call that constructor implicitly. ठीक है, because floating point value शुरू में आ गया. Now floating point value plus and then the distance object, so it means that it will try to invoke the plus function for to add two floating point numbers. ठीक है. But to avoid this situation we can write distance 6.5. ठीक है, हम खुद से explicitly call कर सकते हैं constructor को and we can add it to D1, right? But this is like a cumbersome, right? So it's not looking as convenient as this call. So ये जो call है, ये जो this call is more convenient, like D3 is equal to D1 plus 9.75. So why we are not able to execute D3 is equal to 6.5 plus D1 if we have a floating point value before? Because the floating point value won't cause the operator plus function in the distance class to be executed, and it won't convert or it won't call the constructor for the distance class one argument constructor. So we have to mention or call the constructor explicitly. In order to execute such statement like D3 is equal to 6.5 plus D1, we have to make the operator plus function a friend function of a distance class. So we will see in the next lecture how we'll make that function a friend function in the distance class, and what is its effect if we make any function a friend function as compared to the normal member function of that class. We will continue from here in the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.